Good afternoon, all of you. Climate change, environment ecology, biodiversity, and climate change. Climate change is what we are now landing onto. We talked about dimming when we were taking up the reference of the pollutants and its effect. It has been largely implied as when the change of the climate was given recognition for the first time, we recognized it to be warming, global warming. But now it is applied to be the change of the climate, where dimming, warming, extreme weather events, everything is marking up unprecedented change. So what exactly are the causes, interactive links that are applied with climate change? This is the base image. This image comes from the dashboard of IPCC. I'll make you understand IPCC just in a while. When I have to talk about the causes and the consequences of climate change, so the forces that are leading to change of the climate can incorporate natural forces or natural causes and can incorporate human induced causes. Because you need to understand that the present purview, when we established IPCC was established in 1989 by WMO and UNEP. So IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 1989, it was established with the work of WMO and UNEP. That time we were basically, as global community, were sitting with a debate that are we experiencing the change of the climate? The things that we are experiencing right now, can we call it change of the climate? And if it is yes, why we don't consider it to be something that is natural? You have learned in physical geography that much prior to humans appearing on the face of the earth, we had the incidence of ice ages, its termination. So why it is so that the present change cannot be considered to be natural? So Intergovernmental Panel on Climate Change basically put all such debates to rest, that these changes are too swift, too manipulated, and thus cannot be applied as natural and is induced by humans. But if I say and capture a question which is asking me to take up, consider the following, which of them are causes of climate change? So there are natural causes of climate change also. So take that into account and understand. When I talk about changes in plate tectonics, we actually talk about volcanic dust. Volcanic dust is considered to be one of the most important causes of change of climate naturally. Reason, volcanic dust will act as aerosols. Aerosols tends to scatter incoming solar radiation. Larger the amount of aerosol, hand raise kar dena, will it not lead to lesser availability of insolation and thus creating colder conditions? So when I say changes in plate tectonics, I'm essentially associating it with volcanic dust hypothesis. When I take factor number 2, which reads changes in Earth's orbit, it basically is Milankovitch cycle. Milankovitch cycles are applied to be 3. I'm just taking you to the understanding of it. Milankovitch cycles with obliquity, precision, and eccentricity is marking up the variations of the natural causes of climate change. 3 dimension है इसके, अभी लेकर जा रहे हैं. And the third thing that goes up with changes in the sun strength, it basically is referred to be solar output variation. ठीक है, तो हमारा जो पहला कॉलम है जिसको हमने डिमार्केट कर दिया, that these are natural causes and we have divided them into 3 categories, जिसमें volcanic dust आपको समझा दिया. Volcanic dust is correlated with what? It is enhancing the availability of aerosol, and aerosol will be scattering incoming solar radiation. After massive episode of volcanic activities, we have been experiencing in the geological past, when humans were not there, as glacial period. Okay? So that is done. So I put up a tick to the volcanic dust hypothesis. Now I want all of you to take up the reference of Milankovitch cycles. I'll come back to this image again. So Milankovitch cycles को आप simple ऐसे समझ लो. देखते जाना पहले ध्यान से और नोटिस करना. Milankovitch cycles, point number 1,
is identified to be eccentricity. Eccentricity is defined to be the change in the shape of the revolutionary orbit of planet Earth. It is believed that in the periodicity of some 1 lakh years, Earth's orbital path changes from elliptical to circular. Is it not going to change the distance between the two celestial bodies? And if that will be done, automatically the received energy will be modifying, and that will lead to change and race. Orbital eccentricity, Milankovitch cycle part A. Orbital eccentricity can result into the development of lesser or more attainment. Earths encounter more variation in energy than it receives from Sun when the Earth's orbit is elongated than it does when Earth's orbit is circular. So orbital eccentricity will modify the attainment of incoming solar radiation, 1 lakh years. Part B is referred to be the tilt, or it is also referred to be obliquity. I have written obliquity, diagram reads tilt. We all know that planet Earth is inclined on its axis 23.5 degrees. 23.5 degrees में जो इसकी obliquity है वो 41,000 years के time gap में range करती है. Range कितने बिस्बिंग में करती है? 22.2 to 24.5 degrees. मतलब आप इसका जो tilt का variation है इसको इन दोनों range में रखेंगे. So 23.5 degrees from its axial plane, and in the 41,000 years of the lifespan, it can make up the change between 22 to 24.5. More, the greater the tilt, more solar energy will be received at poles. Hand raise karo, base of climatology padhata hai yahan par. So tilt will modify the attainment of incoming solar radiation. Jitna solar radiation receive karoge, insolation will be regulator of air temperature. That is how we take up the change. And the C is identified to be precision. Precision को आपने wobbling effect demarcate करना है, और जो wobbling effect है इसको कैसे justify करेंगे? ऐसे करके justify कर लो. Presently north pole is pointing Polaris. Polaris का मतलब क्या होता है? North star. It is presently making or is pointing north star, which has been applied as the direction determiner in most of the navigation references prior to the mobilization of GPS and etc. What is wobbling effect? That north pole in place of pointing Polaris or north star will start pointing Vega star. तो इससे हो क्या जाएगा? अपने 4 position of Earth around Sun को सोचेंगे. March से September, that is from spring equinox to autumn equinox, northern hemisphere experiences high sun season. Agreed, hand raise. March to September, northern hemisphere experiences high sun season. If precision will take place, March to September, northern hemisphere will have winters. Have you got it, class? Milankovitch cycles as eccentricity, obliquity, and precision makes the changes in the Earth's orbit, distance between Sun and Earth, and have been the cause of change of climate throughout the geological history when humans were not there. Remind yourself, shortest time span yahan likha hai, and it was 10,000 years before present that Homo sapiens appeared. So मतलब ये टाइम सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है, 12,000 years, but 10,000 years before present we appeared, and planet Earth has got history of 4,000 million years old. I think this is comfortable. So Milankovitch cycle, how many cycles? 3. Eccentricity, obliquity, precision. Okay, after this what you have to take up into reference? Solar output variation. बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से देख लो. Let it be comparative. Let it be comparative. Sun is a star, and when I take up a typical star which is generating its heat energy, so when I take up the reference of Sun, which is continuously generating its heat energy, it is incorporating the solar or sunspots, which is shown in this figure, that denotes typically the time or the areas where we are having lesser generation, areas of less generation.
of heat. So sunspots are on the photosphere of sun, that is the surface of sun. Whenever such sunspots appear, it basically gives us the glimpse that the generation of heat energy and matter of this typical star called sun is less. So if there will be sunspot phase, amount of generated heat energy will be less, emitted energy will be less, received by Earth system will be less. Do I sound correct if I write that sunspot will be correlated with glacial periods on planet Earth? Hand raise kar do. Sunspot will generate glacial period on the surface of the Earth. Reason? Lesser the generation of heat, lesser will be the emitted heat, lesser will be received heat. और उसी का opposite ले लीजिए and please take it up here. It is a photosphere sun that tends to generate solar flare. Solar flare क्या हो गया? Solar flare is denoted to be the phase of extreme large, high generation of heat. It tends to create those solar winds. Solar winds को हम क्या बोलते हैं? Thermal Tory winds. I've written it here. Thermal Tory winds or solar winds are basically denoting out the characteristics that is identified with what? They are denoted on with the characteristics of excessive heat generation and emission. अगर solar flare phase होगा photosphere में, which is creating such type of mass, it has been identified with a typical term. Let me write that because you never know, you can encounter the question on that. It is coronal mass ejection. So I write it here. कोरोना से कोरोनल ले लिया और mass ejection. So whenever we are having a solar flare, coronal mass ejection, net insolation will be high and automatically it will lead to the development of, I think it comes very spontaneous, interglacial period. Hand raise karo. Matlab much prior to humans being there, planet Earth have been experiencing ice cover, its termination, ice cover, its termination. तो किसकी वजह से हुआ? Natural cause की वजह से हुआ. Solar output variation. Sun being a typical star is continuously generating heat energy and matter. There are two distinctive output variations identified. If it is sunspot, it will be leading to the development of glacial period. If it is solar flare, it will generate out the interglacial period. Hand raise करके बता दीजिए. ठीक है, going back to our base diagram. So here we are taking reference of the development that is identified with the distinctive categories of our natural causes of climate change. So when I talk about natural causes of climate change, I have understood volcanic dust hypothesis done, changes in Earth's orbit, we have taken eccentricity, we have taken obliquity, and we have taken precision. या तो इनको अलग अलग लीजिए या इन तीनों को कंबाइन करके बता दो भाई मिलानकोविच साइकिल है. और changes in sun strength, we have understood it can be sunspot and it can be solar flare. अब जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बता दो, हम आगे बढ़ेंगे. By default, it will have its influence on the weather, climate system. Climate system किस किस के साथ associate करेगा? Atmosphere के साथ associate करता है, ice cover के साथ associate करता है, ocean के साथ land surface and vegetation. Mind it, they will be influenced by the changes in the climate and will be influencing it. कैसे करेगा सोच कर देखो. Changes in atmosphere, ozone depleting, greenhouse gases increasing. Why greenhouse gases are increasing? Because carbon sink is on decrease. Yes or no? Because cryosphere, ice cover is melting. अगर ice cover melt करेगा तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो रिफ्लेक्शन आता है, जिसको आप एसोसिएट करते हो आइस कैप से,
जो हमने सूट पार्टिकल्स में पढ़ा ब्लैक कार्बन में, वो एब्जॉर्ब होने लगेगा। एब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी द राइज इन द टेम्परेचर व्हिच विल लीड टू द मेल्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। अच्छा, चेंजेस इन ओशन, प्लीज रिकॉल सी सरफेस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? फोटोट्रॉप्स खत्म हो रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ याद आ रहा है कि नहीं? और जब कार्बन सिंक्स खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी द चेंज। सो इट इज सच एन इंटरवोवन कॉज एंड इफेक्ट कि इसको समझना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। एंड चेंजेस ऑन लैंड सरफेस को सीधा अप्लाई करो, डिक्रीज इन ग्रीन। आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बेल्ट डेवलप कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट मैकेनिज्म, इट कैन रिजल्ट इनटू इंटरनल रिस्पॉन्सेस। प्रॉब्लम है ये सारे इंटरनल रिस्पॉन्सेस ह्यूमन मैनिपुलेटेड हो गए हैं, human induced, and that is the reason the nature of the change of the climate have become much more problematic, and this is what you have to derive from IPCC। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये बेस समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपको IPCC के फैक्टर से आएंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे फोर्सेस एंड रिस्पॉन्स और व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास है, और जब 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करोगे तो यू ऑटोमेटिकली हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हैव बीन मेड। सो उन ऑब्जर्वेशंस को लें तो ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस एज इंटरनल रिस्पॉन्स अपने आप जस्टिफाई हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई टेक दिस पेज एज माय सपोर्ट because I'll be coming back to it one more time, and I want all of us to understand that Intergovernmental Panel on Climate Change, which is functioning since 1989, is a voluntary panel which is divided into 3 working groups: Working Group 1, 2, and 3. Working Group 1 talks about the study of normal, technical, climatic conditions in a given time, in a given location. What should be normal? Money in the month of March, what we are experiencing in India is not normal temperature. Right now the temperature should be much more higher, specifically during night time, but we are experiencing delayed western disturbances. So working group 1 includes scientists. Working group 1 includes scholars who give us the understanding of what is normal, technically what is normal in any given time and space. Working group 2 incorporate again scholars and who are trying to give us the understanding of nature, its nature and magnitude of change. Once I have understood that this is normal, I'll be in the position of judging that this is likely to be abnormal. If we are experiencing western disturbances in the month of March, it is abnormal. If I'm experiencing western disturbances till Sikkim and Arunachal Pradesh, it is abnormal. So those who are aware of what is normal can give me what is abnormal. And apart from nature and magnitude of change, they basically give us the impact also, and that is important. So I want to further emphasize it. Plus, what is likely to be impact of these changes. And then comes in working group 3. Working group 3 actually includes planners and administrators. They don't incorporate scholars because they will talk about adaptation and mitigation. I have already explained what is adaptation and mitigation distinction. Hand raise kar denge. It's a voluntary panel even now. And since its 3rd assessment report, it has organized itself into 3 categories. Working group 1 बताता है किसी given condition में क्या चीज normal है, ताकि हम जज कर पाए कि ये abnormal हो रहा है. वर्किंग ग्रुप 2 बताएगा एबनॉर्मल है और उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, और वर्किंग ग्रुप 3 जो है उसका मिटिगेशन और अडेप्टेशन अटेम्प्ट बताएगा. अडेप्टेशन इसलिए क्योंकि आईपीसीसी बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर चुकी है दैट एवरी चेंज इज इररिवर्सिबल. I cannot make anything back to normal.
Only thing that is there in your hand is to adapt. IPCC 1989 से 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुकी है और 4 स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है. When I take up reference of IPCC's functioning and its reports, you have to understand that IPCC के जो असेसमेंट रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है. अब जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, या यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ देम. Every assessment report gives us a sort of an understanding. Like 89 में आपने पैनल को स्टैब्लिश किया और 90 में पहला असेसमेंट रिपोर्ट आ गया. तो 90 में जब पहला असेसमेंट रिपोर्ट आया, ऑब्जर्वेशन बेस बहुत कम था. So if I read first assessment report, it gives me with low levels of confidence, with moderate level of confidence, it can be said that the changes that we are inducing is by humans with carbon dioxide, etc. तो वो क्या हुआ है, रिपोर्ट्स जो है वो इवॉल्व हुई हैं, ग्रेजुअली दे हैव मार्क्ड अप देयर एवोल्यूशन. एंड ये एवोल्यूशन जो मुझे दिखाई देता है, ये एवोल्यूशन मुझे ग्रेजुअली विद द रेफरेंस ऑफ डेटाबेस, इलैबोरेट एनालिसिस एक्सेट्रा से जस्टिफाई हुआ. So when I take up the reference of IPCC 6th assessment report, what exactly it is giving me into reference? That the present change of the cause of climate change is human induced. इसमें कोई डाउट नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड, nitrous oxide and methane are long-lived greenhouse gases. Their emissions are largely correlated with, पहले ही आपको बता दिया, in the climate variation, their emissions are largely correlated with burning of fossil fuel, land use changes, which includes depletion of green. It is unsustainable agricultural practices, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक एग्रीकल्चर को एज विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज बताया है. लेकिन 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने बहुत जस्टिफाई कर दिया कि एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट द विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. मीथेन का सबसे मेजर सोर्स ऑफ एमिशन है मेन्योर एंड द पैडी फील्ड्स व्हिच आर वाटर लॉग्ड. हैंड रेस करो. जब लैंड यूज चेंजेस की बात करते हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग में सब कुछ ले लो, इंडस्ट्रियल, व्हीकुलर, सब कुछ ले लीजिए. दैट इज द प्रिंसिपल थिंग. And please recall when I talk about unsustainable agricultural practices, कल ही पढ़ा था nitrogen assessment report. Methane, if I take up nitrous oxide, denitrification, urea, unsustainable use ही तो है. So assessment report 6 ने बहुत clearly justify कर दिया है that every change that we are inducing is human and it is irreversible. And what are the impacts that we are taking up when it comes on to the change of the climate? तो जो असेसमेंट रिपोर्ट का इंपैक्ट है उसको आपको जस्टिफाई करना है विद, बिकॉज इट इज द लेटेस्ट रिपोर्ट एंड आई कैन एनकाउंटर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना हम क्या बात कर रहे हैं. सबसे पहली चीज जो इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जल्दी से टाइप करके बताएंगे कौन से वर्किंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे. If I'm judging about impact, so which working group of IPCC is giving me the support? Working group dash gives me impact second. And impact जब जज करोगे उसके बाद ही जज करोगे ना कि उसको हम ओवरकम कैसे करें. तो मेरे पास इम्पैक्ट की क्या क्या लिस्ट है. सबसे पहला है वार्मिंग एंड डिमिंग. आपको पहले भी समझा चुके हैं, इसको आप बहुत आराम से कंबाइन करके टर्म डाल सकते हो. इट्स क्लाइमेट चेंज. वर्ल्ड इज वार्मिंग एक्सट्रीमली फास्टर. And it has been identified that global warming level is on the track of hitting 1.5 degrees Celsius temperature increase by end of 2030 itself. So we are taking a very strong fast factor. Hot extremes are becoming much more intense. तो warming dimming दोनों हो रहा है. Warming is faster. और इसलिए जो आपके हीट वेव कंडीशंस हैं उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ी है कंपेयर्ड टू कोल्ड वेव कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि कोल्ड वेव कंडीशंस कम हुए हैं, लेकिन एक कंपैरिजन आया हमारे पास IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट में, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा फैक्टर जो आ रहा है
जो आप रिपोर्ट में ले रहे हैं वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को आप हजार्ड के साथ कोरिलेट कर सकते हो। आपको पहले ही बता दिया हीट वेव एंड कोल्ड वेव कंडीशंस है। हीट वेव और कोल्ड वेव कंडीशंस के अलावा वी हैव टू टेक इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कॉम्बिनेशन। सो जो डिमार्केशन है वो टर्म्स लिख देते हैं। इट इज फ्रीक्वेंसी, it is intensity, it is duration, it is time, it is combination and it is areas। माने सब कुछ ही मॉडिफाई हो गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए? बे ऑफ बंगाल में। कब होना चाहिए? रिट्रीटिंग मॉनसून में। हो कब रहा है? अरेबियन सी में एंड ड्राई समर्स में। सो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, इंटेंसिटी चेंज हो गया, ड्यूरेशन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, एरियाज चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब थिंग्स हैव बिकम हाईली अनप्रिडिक्टेबल। Extreme weather events are increasing in their size, increasing in their number, increasing in their duration and are becoming unpredictable। इसके बाद जो तीसरा डिटरमाइनर इंपैक्ट आया है उसको आप कह रहे हो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। रिकॉल करेंगे आपने हिप्को में क्लाइमेट चेंज रखा था। जब आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो ये अपने आप में इतना बिग ब्रॉड डोमेन है कि इसको इंडिविजुअली हाईलाइट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में सारी चीजें आ जाएंगी। टुंड्रा टाइगा आर बिकमिंग वार्म, डिस्चार्ज इन रिवर इज इंक्रीजिंग, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लैंडवर्ड शिफ्ट ऑफ शोरलाइन। समझ में आ रहा है क्लास? जो नेरेटिक जोन है वो इंटरटाइडल बन जाएगा, या जो इंटरटाइडल है वो नेरेटिक बन जाएगा। तो क्या ऑर्गेनिजम्स को मुश्किल नहीं होगी अडेप्ट करने में? हैंड रेस करके बताना। इफ आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ शिफ्टिंग, स्नो लाइन इज शिफ्टिंग अपवर्ड, डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ द मेल्ट ऑफ आइस, रिवर में वाटर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर वॉल्यूम एंड रनिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्या लोटिक और लेंटिक हैबिटेट डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे? ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ा मुश्किल है उसको अडेप्ट करना। फ्लडिंग होगी तो जो रिपेरियन एरिया है वो परेशान होगा। सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज का डिमार्केशन ले लेते हैं। दैट सी सरफेस इज राइजिंग, इट इज लीडिंग टू राइज इन सी लेवल। Rise in sea level is basically due to thermal expansion. Thermal expansion because 90% of heat added to the climate system is absorbed by ocean. तो सोचकर देखो कि जिसको आपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैबिटेट बोला था वो बन गया पिलाजिक, जिसको आपने इंटरटाइडल कोकोनट पाम के साथ डाला था वो बन गया मैंग्रोव, और जिसको आप ऑन लैंड बोलते हो वो कोकोनट पाम बन गया। तो होगा नहीं सारे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एवरी डोमेन पूरा का पूरा। Mahogany is typical to the certain type of temperature and precipitation. Now it is not having. और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ग्रीन डिप्लीशन होगा, तो उसका इंपैक्ट फिर क्लाइमेट पर आएगा। हैंड रेस करके बताएंगे। जो चौथा इंपैक्ट हमें बताया गया, ये सारे प्रीवियस रिपोर्ट्स में भी है और 6th असेसमेंट रिपोर्ट में भी है। इट इज अबाउट एग्रीकल्चर विद फूड इनसिक्योरिटी। क्योंकि when I talk about the most vulnerable segment when it comes to change of the climate, it's agriculture. हीट वेव होगा, कोल्ड वेव होगा, ड्राउट होगा, फ्लड होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक लैंडफॉल होगा, इंपैक्ट आएगा एग्रीकल्चर पर। और फूड तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। एग्रीकल्चरल पर नेगेटिव इंपैक्ट इज डायरेक्टली चैलेंजिंग फूड इनसिक्योरिटी इन वर्ल्ड। और इसी के साथ कंबाइंड फैक्टर में आया आपका वेक्टर बोर्न डिजीजेस, which was earlier confined only to warmer, wetter climate. We are now becoming more prone to waterborne, vector-borne, change of the climate, pathogens, different categories. So disease is very important. जो 6th assessment report में सबसे नई चीज आई है, नंबर 6 and with a star. अगर मान लीजिए ये मेरा एक अर्बन एरिया है, हमने इसको ऐसे कर दिया, दिस इज अर्बन एरिया, सिटी है कोई, and it is surrounded by all villages, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अर्बन आइलैंड।
और ये हीट आइलैंड तब बन जाएगा जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग विलेज के मुकाबले में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन को हीट हॉट स्पॉट्स बताया है, and this is basically coming up with the reference of all the factors that goes up with absorption, built up area. I've written more than 5 degrees Celsius. Built up area, decreased green, particulate matter, carbon dioxide emissions है ना भाई, automatically it will be giving us the reference of the heat retention properties that are being applied. Urban heat island effect. Urban areas are becoming hotspots of global warming. Urban areas are becoming hotspot of global warming because they are attaining more and radiating less. Attain क्या कर रहा है? Surface भी कर रहा है, buildings भी कर रही है. Buildings में air conditions अपना emission कर रहे हैं, vehicles अपना कर रहे हैं, industries अपना कर रही है, pollutants इतने ज्यादा हैं जो trap कर रहे हैं outgoing terrestrial radiation को, सबको combine करके आप heat island effect create कर रहे हैं. I'm zooming it out. What are the causes of change of climate? Causes of change of climate includes nature-induced, volcanic dust, Milankovitch, eccentricity, obliquity, precision, solar output variation, sunspot, and solar flare phase. It is human-induced, IPCC, 6th assessment report. All the changes induced to the climate system by humans are irreversible. Working group 1 and 2 have given us that understanding. Impact of working group 2 justifies 6 factors. Global climate is on change with warming and dimming. Warming is much more stronger right now than dimming. Extreme weather events are increasing in their frequency, intensity, duration, time, location, variable combination. There is consistent habitat destruction because of the multiple causes. Agriculture and food insecurity is increasing. It is vector-borne, water-borne diseases that are marking up the strong increase. And the last thing that has been added with the 6th assessment report, urban areas are becoming hotspot of global warming. IPCC has been publishing not just the assessment reports, which is important for us to take into consideration. It has also been publishing the special reports. And which are the special reports? Are you giving me go ahead? Perfect. अब क्या करो, आईपीसीसी के जो असेसमेंट रिपोर्ट कॉज ह्यूमन इंड्यूस्ड एंड इरिवर्सिबल को मेंटेन कर लेते हैं, और जो स्पेशल रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है उसको, इट इज बीन पब्लिश्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स. अगर हमें जैसे इंडिया एंड द अदर पार्टीज टू द member to IPCC, all United Nations members are members of IPCC. So organization of members of UN and WMO hai. So special report is being published on the request of members. And when I take up members, as I said, it is organization of members of UN and WMO. तो जितने भी members हैं वो सब के सब यहाँ पर include हो गए. स्पेशल रिपोर्ट में मेरे पास है SREEN, SREX. These are the special reports जिसका नाम बताएंगे, आप जल्दी से बता देना कौन से वर्किंग ग्रुप के साथ अप्लाई कर सकते हैं. SRGM and SROCC. SR stands for special report. Special report on renewable energy. Renewable energy. REEN, renewable energy. ये हो गया स्पेशल रिपोर्ट ऑन एक्सट्रीम इवेंट्स, EX. स्पेशल रिपोर्ट ऑन एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है. अच्छा, SRGM स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. बता दिया ना, पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस को कंटेन करने की बात की गई है. And we are taking up that to be hitting right there by 2030. So it's absolutely round the corner. And the special report on oceans and sea cryosphere. So सोच कर देखना, अगर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी पर स्पेशल रिपोर्ट बनाई तो ये तो मिटिगेशन का टास्क हो गया.
तो मिटिगेशन का टास्क हुआ, तो ये तो वर्किंग ग्रुप 3 में जाना चाहिए, हैंड रेस कर दो। रिन्यूएबल एनर्जी क्या जाएगा? मिटिगेशन, नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक। एक्सट्रीम इवेंट जाता है इम्पैक्ट पर, तो इम्पैक्ट तो बाय डिफॉल्ट मुझे वर्किंग ग्रुप 2 पर ले जाएगा, हैंड रेस करते जाएंगे क्लास। एंड व्हेन आई से स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट की बात है, या स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशंस एंड क्रायोस्फीयर, वो भी इम्पैक्ट की बात है। तो इन दोनों को भी आप वर्किंग ग्रुप 2 के साथ एसोसिएट करेंगे, क्योंकि ये आपको इम्पैक्ट असेसमेंट बता रहा है कि जो चेंज ऑफ द क्लाइमेट हो रहा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है व्हेन आई एम टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव कंस्ट्रक्टमेंट। सो आईपीसीसी ने अभी तक मेरे को 6 असेसमेंट रिपोर्ट दी है और 4 स्पेशल रिपोर्ट दी है। Special reports are published on the request of the members, and all the members of United Nations and WMO is member of IPCC. IPCC continues to function as the voluntary panel. जितनी भी डेटा कंट्रोवर्सी है IPCC के साथ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के डोमेन पर ही फंक्शन करता है। अब आप हमें हैंड रेस करके बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये हुआ हमारा स्टेप 1। अब मुझे थोड़ी सी डिटेल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आई जस्ट वांट टू गेट ऑन टू द बोर्ड, वहां पर थोड़ी सी आसानी से कंटेंट को बिल्टअप करने में सुविधा होगी। ओके, अब आईपीसीसी का जैसे हमने आपको बताया, पूरी कंट्रोवर्सी, जितनी भी कंट्रोवर्सी आप रखो, आईपीसीसी की कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी सारा का सारा, प्लीज रिकॉल 1992 अर्थ समिट, यूएनसीबीडी कर लिया था, आप करने वाले हैं यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी को आप 1994 से ट्रेस करना शुरू कीजिए। यूएनएफसीसीसी इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज हुई हैं वो ईयरली हुई है, इसलिए इसकी कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन कॉन्फ्रेंसेस की पार्टीज का आउटकम हुआ था कोयोटो प्रोटोकॉल, जिसके हमने 2 कमिटमेंट पीरियड्स कंप्लीट किए हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं अभी आपको समझा रहे हैं, और आज की डेट में इसको आप पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हो। सो व्हेन आई टॉक अबाउट UNFCCC is one of the 3 outcomes of Earth Summit 1992 United Nations Conference on Environment and Development. UNFCCC को अम्ब्रेला कन्वेंशन कहते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए। जब आप कोयोटो कमिटमेंट पीरियड के बारे में बात करते हो, या जब आप कोयोटो कमिटमेंट पीरियड के असेसमेंट के बारे में बात करते हो, तो आपको अपने आप को रिलेट करना है विद द डायमेंशंस ऑफ द ग्रोथ, है ना। तो कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ द ग्रोथ है? CDM विद CER आपको समझाया था, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, ये सारे टर्म्स आज भी इस्तेमाल होते हैं। REDD प्लस विद TEEB, MRV with green fund, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, incorporate flexible mechanism, CDM CER, ये आपका जाएगा कमिटमेंट पीरियड 1 के साथ। इस पर हमने ऐड कर दिया REDD प्लस एंड MRV with green fund कमिटमेंट पीरियड 2, एंड पेरिस एग्रीमेंट मतलब आप COP, you are taking it up with the reference of conference of party 21 से अब आप COP 27 को जज करिए, और COP 27 में जो इंडिया का पंच मित्रा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पर पहले इसको समझते हैं। What are the global climate change mitigation and adaptation strategies? CDM और CER कल समझाया था, एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं। CDM का मतलब है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और CDR का मतलब है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, कि आप नेक्स्ट स्टेप जो भी लें उसमें आप एमिशन रिडक्शन को रिड्यूस करें। सो CDM इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजी। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होता है इन ल्यू टू। सो अगर हम इसको लेबल कर दें AB, तो B का मतलब होता है इन ल्यू, इन प्लेस ऑफ। So when I talk about the countries like NX1, जिसमें आप यूरोपियन यूनियन को काउंट कर लो, NX2 जिसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी,
तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कमिटमेंट पीरियड 1 में कंपल्शन था टू कट डाउन ऑन द एमिशंस, तो ओवरनाइट आप अपने एमिशंस को तो कट डाउन नहीं कर सकते. तो इन प्लेस ऑफ कटिंग डाउन ऑन योर ओन एमिशन, यू फंड द लो कार्बन टेक्निक टू द न्यू कंट्री. So flexible mechanism is the reason that इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सोलर मिशन, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फंड एसोसिएशन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? तो सीडीएम तो हुआ कि मुझे जो नेक्स्ट डेवलपमेंट करना है वो मैं क्लीन एनर्जी पर करूंगा. और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है? आई नीड टू कट डाउन ऑन माय एमिशन. तो ओवरनाइट आई कैन नॉट चेंज माय कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे ऑटोमोबाइल है. So in lieu of cutting down on my own emission, I can fund low carbon technique to the other country. And that is the reason there was the beginning of carbon trading. या तो आप कार्बन क्रेडिट परचेज करो या फिर आप लो कार्बन टेक्निक को स्पॉन्सर करो, ताकि आप अपना डोमेस्टिक एमिशन का के बदले में कुछ काम कर सकेंगे. आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ अस. सो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन से आप कार्बन क्रेडिट एनहांस करते हैं और आप कार्बन क्रेडिट को परचेज कर सकते हो कि भाई मैं ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा हूं तो आई विल बी परचेजिंग कार्बन क्रेडिट, सो आई एम पंपिंग अप द फंड व्हिच विल फैसिलिटेट द लो कार्बन टेक्निक. ये सब फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में ही मोबिलाइज हुआ. जब क्योटो कमिटमेंट पीरियड इंप्लीमेंट हुआ, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, तो शुरू हुआ REDD. अब REDD को लेबल कर देते हैं नंबर C. REDD को प्लस किया है न्यू दिल्ली के एडमिट स्टैंड ने. REDD stands for reduction of emissions from deforestation and forest degradation. तो समझ कर देखेंगे कि अगर आप N plus is comprehensive. This was facilitated by the economics of ecology and biodiversity. TEEB जो है वो group 8 summit हुआ that marked up the German initiative 2000. When we take up the reference of the mobilization of it, it basically was initiated by group 8 that global community is losing out on biodiversity to the tune of several million US$ every year, and we should take up that ecosystem services to our stride. उसको लेकर हमने REDD plus डाला. That if we are just talking about cut down on emission, and thereby we can reduce on the concentration of greenhouse gas. उसका एक alternative भी तो हो सकता है, increase the carbon sink and raise करो. तो increasing the carbon sink was maintenance of green. तो cutting down भी कीजिए और sink को भी enhance कीजिए. And basically REDD plus facilitated green into carbon trading. And that was the reason that there was the mobilization of monitoring, reporting and verification. क्योंकि भाई जब आप पूरे वर्ल्ड को कार्बन ट्रेडिंग में डाल दोगे तो कहीं तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना कि किसके पास कौन सा कार्बन क्रेडिट है, वो किस लेवल पर उसको लिक्विडेट करेगा. And that is the reason MRV marked up its beginning with the Kyoto Protocol second commitment period itself. ये सारी चीजें आज भी वैलिड है, पर आज की डेट में आप वॉलंटरी प्लेज के साथ चलते हो जिसको कहते हैं बाइनियल अपडेट रिपोर्ट. सुना होगा आपने. बाइनियल अपडेट रिपोर्ट BUR is intended nationally determined contribution INDC which is being submitted to UNFCCC by all the member countries. बाइनियल अपडेट रिपोर्ट 2 साल में एक बार हर कंट्री अपना एक वॉलंटरी प्लेज लेकर चलेगी that we will be contributing this much in 2 years time frame and it will be submitted to UNFCCC. It involves shared but differentiated responsibility. क्योंकि आप अपने आप को ये वाला इंफॉर्मेशन अप्लाई कर देना. रिक्लासिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है. हमने जब इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन को शुरुआत किया था, then we divided all the member countries into these 3 categories. Annex 1 में आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज को लेते हो, यूरोपियन यूनियन को रखो. Annex 2 में आप डेवलप्ड वर्ल्ड को लेते हो, USA को रखो.
और नॉन एनेक्स में आती हैं सारी डेवलपिंग कंट्रीज। आप इसमें सैंपल ब्रिक्स को रख लो। जितने भी टग ऑफ वॉर हुए हैं वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हुए हैं, क्योंकि हमें पता है 2010 में जो कार्बन रिपोर्ट आई, चाइना वाज द लार्जेस्ट कार्बन फुटप्रिंटर, और चाइना आ रहा है नॉन एनेक्स में। चाइना के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू कट डाउन ऑन एमिशन इन द क्योटो कमिटमेंट पीरियड। तो यूरोपियन यूनियन का टग ऑफ वॉर होना तो लॉजिकल था कि आप चाइना इंडिया जैसी कंट्रीज को कट करने के लिए नहीं कह रहे और हमें कट करने के लिए कह रहे हो। And that was the reason that we had the debate about not the size of carbon footprint, but the per capita emissions. That was the reason we could push Kyoto Protocol to the second commitment period. पर अब आज की डेट में पॉइंट इतना चैलेंजिंग हो गया है that every country is required to take the pledge. तो नाइजर या सोमालिया या कैमरून जैसी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली कम होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। उन्हीं चीज को कंबाइन करके इट इज शेयर्ड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी कंट्री विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही फैक्टर है जिसको आप आज की डेट में एसोसिएट करते हैं किसके साथ? I'm writing it here. It is Conference of Party 27. It has been extended as the Paris Agreement ratified by maximum of the members. It has been referred as Sharm Sheikh Implementation Plan. सबसे लेटेस्ट है इसलिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लीजिए। यू नेवर नो, यू कैन एनकाउंटर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये बाइनियल अपडेट रिपोर्ट आईएनडीसी के साथ एसोसिएट कर रहा है। इसमें जो इंडियन प्लेज है उसको हम कहते हैं पंचमित्रा, दैट स्टैंड्स फॉर 5 नेक्टर एलिमेंट्स। So India, as a very prominent, seriously taken player when it comes to the climate pledge, has taken up five pledges, and these 5 pledges can be the potential question. सबसे पहला pledge है 500 gigawatt of non-fossil capacity by 2030. दूसरा है 50% of commercial energy from renewables by 2030. The third of the Panchmitra that we take up into account, decreasing greenhouse gases emissions, especially carbon dioxide. Carbon dioxide is accounting for more than 50% of greenhouse gases by 1 million tons to 2030. Number 4, reduction of carbon intensity of economy by 45%. ये सबसे बड़ा इंक्रीज दिया है इंडिया ने, by 2030 ओवर 2005। माने 2005 के लेवल से हम 45% कार्बन इंटेंसिटी एमिशंस को डिक्रीज करेंगे, एमिशन इंटेंसिटी लेवल्स, है ना। और जो सबसे एम्बिशियस टारगेट है स्टार मार्क करके, इट इज नेट जीरो एमिशंस by 2070. Panchmitra, 5 nectars, shared but differentiated responsibility. INDC, India, because हर कंट्री का अपना अलग प्लेज है, हमारे कंट्री के प्लेज को डिमार्केट कर सकते हैं अपने स्टडी में, but the focal point of the study has to be what is the Indian pledge, because Indian pledge को आप associate कर सकते हो with something that has been identified as one of the most serious players when it comes to the reference of, and how India is going to attain that. ये जो 5 नेक्टर हमने अप्लाई किया है, इसको इंडिया अटेन किस तरह से करेगी? इंडिया इसको अटेन करेगी with the mobilization of, please recall, EPA. पहले तो go ahead दो जल्दी से।
Consider the following. Which of them are global climate change mitigation attempt as per UNFCCC? It is CDM with CER, it is flexible mechanism, it is REDD plus, it is MRV with Green Fund, it is voluntary pledge, and it is shared but differentiated responsibility. हर चीज ग्रेजुअली आगे बढ़ी है. कार्बन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप अपने कार्बन एमिशंस को कितना कम करोगे, जीडीपी का कितना शेयर कार्बन. हमेशा एक चीज सोच कर रखना. I'll just stop screen share for a while. एक चीज हमेशा सोच कर रखना. One of the conferences of parties of UNFCCC was going on, and one of the leading dailies came up with a cartoon where poor couple, patched clothes पहने हुए, and female is burning firewood. और फायरवुड बर्न करते हुए शी इज सेइंग आई होप आई एम नॉट सरपासिंग माय कार्बन लिमिट. आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एज एलिमेंट्री एक्टिविटी एज बर्निंग फायरवुड इज लीडिंग टू कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन का सीधा सीधा एसोसिएशन जाता है विद इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यू हैव टू क्रिएट आउट अ बैलेंस दैट यू आर जनरेटिंग लेसर कार्बन दो यू आर नॉट हॉल्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इज हियर टू स्टे. यूएनएफपीए क्या कह रहा है? ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ तो 2150 तक बढ़ेगा. अभी तक भी हमने अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी इंड्यूस नहीं की है. कैन आई हॉल्ट डेवलपमेंट? आई कैन नॉट. आई नीड टू मेक डेवलपमेंट मोर जुडिशियल. आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल. दैट इज द रीजन emission intensity reduction, EIR, what share of GDP? So India started with a target of 30-35%. Now we have increased it to 45%, and it automatically will be increased when we'll be taking 500 gigawatts of renewables, 50% of the commercial energy based on what is identified as non-fossil fuel. So that automatically will come up. अच्छा, अब बात करेंगे EPA. जल्दी से बताओ. The 3 flagship laws that regulates the functioning of nodal ministry. क्योंकि पॉइंट शुरू कर दे वहां से, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा. इंडिया ने एक वॉलंटरी प्लेज लिया बिकॉज इंडिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पैनल. और इस वॉलंटरी प्लेज के हिसाब से इंडिया विल बी नाउ टेकिंग दीज वॉलंटरी अप्रोचेस. समझ में आ गया? इसको पूरा करने के लिए इंडिया क्या कर रही है? इंडिया पूरा करने के लिए NAPCC कर रही है. अब जल्दी से मुझे बताइए 3 flagship laws that regulates the functioning of nodal ministry. I'm waiting for answer. Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act and Environment Protection Act. Environment Protection Act में CPCB का functioning पढ़ चुके हैं. Environment Protection Act incorporate NAPCC and INCCA. INCCA को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएट करेंगे. अभी NAPCC के बारे में बात कर रहे हैं. India have voluntarily pledged towards 5 nectar element. India calls it Panch Mitra. We are having the ambitious target of biennial update report of our intended nationally determined contribution. समझ में आ गया? How we will attain it? क्या कर रहे हैं हम to attain it? To understand it, you have to remember, and it can be a potential question frame. What you have to remember is this. थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. काफी कन्वेंशनल पार्ट है, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज कर दोगे तो काम बहुत आराम से हो जाएगा. तो डिमार्केट करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, Bureau of Energy Efficiency. Number 1, solar mission. Number 2, energy efficiency. Number 3, national mission on Himalayan ecosystem. Number 4, Green India mission. Green India mission. जैसे इन दोनों मिशन को लोगे, मेरे ख्याल से बहुत आराम से आ जाना चाहिए. ये दोनों आ गया फंक्शनिंग डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. उसके बाद आएगा मेरा 5वां. इट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन. उसके बाद है मेरा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है,
पहले वाटर मिशन लिख देते हैं, नेशनल वाटर मिशन। फिर ले लेते हैं सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। और जो 8वां है ये जाएगा स्टार मार्क के साथ, इट इज नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनको ओपन कर लेते हैं। ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये हो गया जल शक्ति मंत्रालय, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये है मल्टी डिपार्टमेंटल। वी आर रनिंग 8 मिशन मोड प्रोग्राम एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जब आप कह रहे हो पंचमित्रा में कि हम रिन्यूएबल्स पर अपना फोकस डालेंगे, तो सोलर मिशन आ गया। सोलर मिशन में आपको जस्टिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी टेक अप द रेफरेंस ऑफ इंडिया एज द टॉर्च बियरर ऑफ मोबिलाइजिंग सोलर। Now India is also mobilizing on the support to the families towards generating solar power plant. Energy efficiency, because India is the example of the country which is having maximum of energy wastage. Himalayan ecosystem recall करो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ग्रीन बचाओगे तो कार्बन सिंक होगा। ग्रीन इंडिया मिशन में सारे प्रोग्राम्स जो आपने पढ़े, एवरीथिंग, प्लीज रिकॉल द 3 कॉलम्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सारी चीजें ग्रीन इंडिया मिशन का हिस्सा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन में हमने बताया नाइट्रोजन असेसमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल शक्ति मंत्रालय बाय डिफॉल्ट बिकॉज वी आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ वाटर, लो टिक लेंटिक। सस्टेनेबल हैबिटेट में आप गृह की बात करते हो, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट, इट इज हैबिटेट फॉर बिल्ट अप एरिया फॉर ह्यूमंस, कि आप किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट हाउस बना रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, CFL का इस्तेमाल है, बिग विंडो पेमेंट है ताकि डे लाइट सेविंग हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। एंड जो स्ट्रैटेजिक नॉलेज है वो बेसिकली ओरिएंट कर रहा है सब कुछ, सर्वे ऑफ इंडिया, IMD, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, क्रायोस्फीयर स्टडी, सारा स्ट्रैटेजिक नॉलेज सबको कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव परव्यू एज अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। वी आर रनिंग 8 मिशन मोड प्रोग्राम। और जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर आता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी इसको समझाएंगे सेकेंड ब्लॉक में, उसको बोलते हैं इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, INCCA। INCCA की शुरुआत 2009 से हुई है, दोनों EPA के अंदर। तो CPCB, NAPCC एंड INCCA। INCCA अभी वेट कर रहा है, उसको वेट करने। इंडिया इज टू अप्लाई 5 नेक्टर पंचमित्रा, which is actually the implementation and the success and the confidence that we are having, that because we are running the program called NAPCC since 2008, we will be in the position of attaining these 5 programs or 5 INDC that we have taken towards our study of Environment Protection Act. अच्छा, अब अगर आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट को IPCC से थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाओगे तो यू विल एनकाउंटर वियना कन्वेंशन। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में IPCC, UNFCCC से थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो इट इज वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन भी एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कन्वेंशन है, 1985 का है, पुराना है, एंड इट हैज लेड टू द जेनेसिस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप लार्जली एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल बोलते हैं बिकॉज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS have been largely controlled. Montreal Protocol came into force in 1989. Montreal Protocol came into force in 1989 as a legally binding protocol, which is designed towards protecting ozone by terminating the production of ODS, have been successful because ODS is not central to economic development.
मतलब अगर आप एक जनरल कंपैरिजन लेकर अपने असेसमेंट को आगे बढ़ाओ तो यूएनएफसीसीसी के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहा कि हम जो भी कुछ करें उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, क्योंकि जो कार्बन है वो मेन स्ट्रीम्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इतनी सेंट्रलिटी नहीं रखते ओजोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और दूसरा जो है, वी हैव गॉट मल्टीलैटरल फंड। मल्टीलैटरल फंड जो है वो हमेशा से इंटेग्रल पार्ट रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, फंडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लाई बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फैक्टर। तो वो यूएनएफसीसी में क्यों नहीं हुआ? याद करो कि यूएनएफसीसी में एक तो आपका प्रॉब्लम है मिटिगेशन, कि जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हो वो सीडीएम हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जो आपका फंक्शनिंग है उसमें अगर आप अपने कार्बन क्रेडिट को सरपास कर रहे हो तो आपको कार्बन क्रेडिट परचेज करना पड़ेगा, वो भी करोगे। तो ग्रीन फंड पे सपोर्ट कौन करेगा? यहां पर ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं, तो ग्रीन फंड शुरू से ही था। और इसलिए ओडीएस की कैटेगरीज डिमार्केट की गई। जब आप ओडीएस की कैटेगरीज में सीएफसीज, हेलॉन्स और सीटीसीज को लेते हो और इनको कंपेयर करते हो HCFCs एंड मिथाइल ब्रोमाइड से, बहुत ध्यान से जज कर लेना है, सारे ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये हैं मोर हार्मफुल और ये हुए इंटरिम सब्स्टिट्यूट। और यहीं पर आपका आता है किगाली अरेंजमेंट। किगाली अरेंजमेंट इज द रीजन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके सामने दोबारा से हाईलाइटेड परव्यू में आ गया। सो व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ किगाली अरेंजमेंट भी बोलते हैं, अग्रीमेंट भी बोलते हैं, इसमें क्या कर दिया आपने, जो ग्रुप 1 कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए है, इनको HCFCs को 2036 तक कंप्लीटली फ्रीज करना है। जो ग्रुप 2 है इसमें आप ले लो, चाइना इंक्लूडेड है, ब्राजील इंक्लूडेड है, यूरोपियन यूनियन इंक्लूड कर देंगे, ये 2045 तक फ्रीज करेंगे। और जो ग्रुप 3 है इसमें इंडिया है, इंडिया इज इन किगाली अग्रीमेंट, 2 साल का एडिशनल ग्रेस मिला है, फ्रीज करेंगे HCFC एंड मिथाइल ब्रोमाइड। किया गया, ODS ozone depleting substances are largely generated in air conditioners industries, aerosol industries, refrigerator industries. So what we did was, with multilateral fund, we substituted the more harmful ODS with the less harmful ODS, क्योंकि substitution closing down से better option होता है। तो CFCs को आपने HCFCs से सप्लीमेंट किया, या आपने CTCs कार्बन टेट्रा क्लोराइड को मिथाइल ब्रोमाइड से सब्स्टिट्यूट किया। अब किगाली अरेंजमेंट में हमने क्या किया है कि जिनको आपने सब्स्टिट्यूट के तौर पर रिप्लेस किया था उसको भी आप ग्रेजुअली फ्रीज करेंगे। तो जो कंट्रीज इकोनॉमिक लेवल पर हायर पॉइंट पर हैं उनको फ्रीजिंग जल्दी करना है और बाकी को धीरे धीरे करना है। तो ये ग्रुप 2 एंड 3 को थोड़ा ज्यादा ग्रेस दिया गया है, ग्रुप 1 को कम ग्रेस दिया गया है। दिस इज हाउ वियना कन्वेंशन मार्क्ड अप इट्स फंक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आई है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो कंप्लायंस इंडिया लेती है वो जाता है INCCA के अंदर। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड दस इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मल्टीलैटरल फंड। और मल्टीलैटरल फंड में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंप्लायंस के लिए इंडिया के पास सपोर्ट आ रहा है उसको आप इंडिया के कंट्री प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू INCCA। गो अहेड दोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर ले लो इसको, इट गिव्स यू द क्लैरिटी। ये जो मल्टीलैटरल फंड के साथ आएगा ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो कंप्लायंस है इंडिया का, कंप्लायंस इज इन द डोमेन ऑफ INCCA। और इसी के लिए इंडिया ने कंट्री प्लान मोबिलाइज किया जहां पर CFCs को HCFCs के साथ सप्लीमेंट किया, एंड इंडिया नाउ इज इन द पोजीशन ऑफ freezing HCFCs by 2047. We have already supplemented CFCs with HCFCs or halogens and CTCs
with methyl bromide. So am I done with INCCA just by taking Vienna Convention? Actually not. INCCA को जज करने के लिए क्या और ऐड करना पड़ेगा? इसको रिमूव कर देते हैं. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का आपने डायमेंशन जज कर लिया है. INCCA को अगर आपने डिटेल आउट करना है तो अपार्ट फ्रॉम वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, INCCA का डोमेन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही लिख देते हैं ताकि कनेक्टिविटी शुरू हो. ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया. उसके अलावा वी आर टेकिंग अप रेफरेंस ऑफ 4x4 असेसमेंट रिपोर्ट. सीधा क्वेश्चन बन सकता है. 4 एरियाज हैं एंड 4 सेक्टर्स हैं. 4 एरियाज कौन कौन से हो जाएंगे? हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स. मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें. एंड कोस्ट. हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्ट. सब्स्टिट्यूट कर दोगे, you will not be utilizing it, you will be phasing it out, you will freeze it, you will create out a different domain. And 4 sectors कौन कौन से हो गए जो क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं? तो ये होगा वाटर, ये होगा एग्रीकल्चर, ये होगा फॉरेस्ट और ये होगा हेल्थ. 4x4 असेसमेंट रिपोर्ट कि what is likely to be the impact of climate change on the 4 areas and 4 sector, ताकि हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग परव्यू को मोबिलाइज कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा पार्ट सी में इंडिया इज रनिंग कार्बोनेशियस एरोजोल प्रोग्राम. इसी प्रोग्राम को इंडिया का आई मैप बोलते थे, इंडियन मिडिल एटमॉस्फेयर प्रोग्राम. अब मिडिल एटमॉस्फेयर को रिकॉल करो जल्दी से. ये बनाया था हमने अपना इनर एटमॉस्फेयर. ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है. तो मिडिल एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर क्या हुआ? ओजोनोस्फेयर. हैंड रेस कर दीजिए. 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर है. मिडिल एटमॉस्फेयर प्रोग्राम, मिडिल इन द इनर एटमॉस्फेयर. आज आप उसको कार्बोनेशियस एरोजोल प्रोग्राम बोलते हो. कार्बोनेशियस एरोजोल प्रोग्राम इज द स्टडी ऑफ सूट पार्टिकल्स. क्या क्या उसके केमिकल कंपोजिशन है, उसका कौन सा स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी वजह से वो क्या इंपैक्ट इंड्यूस कर सकता है ऑन द क्लाइमेट. क्योंकि कुछ एरोजोल ऐसे होंगे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट अलग अलग होगा. तो कार्बोनेशियस एरोजोल का डिमार्केशन भी INCCA में देते हैं. इसलिए INCCA को नॉर्मली जनरली ज्यादा आसान तरीके से इंडियन IPCC भी कहा जाता है. कि मतलब INCCA is creating the network to understand what is leading to change of climate, what is likely impact, ताकि हम उसके हिसाब से अपना काम कर सकें. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कंप्लायंस INCCA के अंदर जाती है. और इसके अलावा जो आपका जो टारगेटेड एरिया है उसमें आप एक और पॉइंटर ऐड कर सकते हो, दैट इज नंबर D. LTEO मोबिलाइज किया है. इट्स लॉन्ग टर्म that what is likely to be the impact of change of climate on ecology, land use change का, carbon flux का, carbon geology का, सबका. carbon flux का मतलब क्या होता है? excessive decomposition will lead to more flux of carbon. Mass deaths, mobilization of decomposition is going to increase the greenhouse gases. Land use changes is going to generate out modifications in the carbon sinks, and carbon sinks by default will be manipulating the carbon content. So LTEO एक नया एडिशन है इन INCCA कि इकोलॉजी से भी आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट.
आई एम ऑन द रेपिटेशन मोड नाउ। क्वेश्चन किसी भी फ्रेम पर पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग दैट इज अराउंड, and thereby the question comes in, you are in the position of justifying. INCCA में कुछ मेरे पास ज्यादा अपडेशन नहीं है, NAPCC के 8 कंपोनेंट में मेरे पास कोई अपडेशन नहीं है, लेकिन NAPCC का जो टारगेट पंचमित्रा में एड ऑन हुआ है तो वो मेरे लिए एडिशन हो गया। आई एम रिपीटिंग नाउ, रिलैक्स एंड रिमाइंड योरसेल्फ। When I say what is the cause of climate change, I know it is natural and human. It is human that is causing more problem. So global community judges human-induced causes, consequences of climate change as IPCC. IPCC 1989 से वर्क कर रहा है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट दे चुका है हमें और 4 स्पेशल रिपोर्ट दे चुका है। Assessment report has given us the understanding that what we are experiencing is actually change of climate and it is induced by humans. इसके impact जो है वो extreme weather events के साथ, food insecurity के साथ, vector-borne diseases के साथ, urban heat island के साथ, आपको extreme weather events, it is giving you all challenging avenues. What are we doing as global community to adapt and mitigate? United Nations Framework Convention on Climate Change is the umbrella convention working towards mitigating the impact of greenhouse gases and adapt to the induced changes. UNFCCC ने क्या-क्या चीजें mobilize की हैं? CDM with the CER, flexible mechanism, TEEV, MRV with Green Fund, voluntary pledge of shared and differentiated responsibility. Hand raise कीजिए। इंडिया का INDC जो BUR बाइनियल अपडेट रिपोर्ट के साथ दिया गया है UNFCCC को, उसमें हमने पंचमित्रा ऐड किया। उसको फुलफिल करने के लिए वी आर हैविंग NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकॉर्पोरेट 8 मिशन: सोलर, एनर्जी एफिशिएंसी, हिमालयन, ग्रीन इंडिया मिशन, वाटर मिशन, सस्टेनेबल मिशन, हैबिटेट मिशन एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन. When I take reference of the other convention that is correlated with adaptation and mitigation of climate change, it is Vienna Convention. Vienna Convention is centered around ODS. Ozone depleting substances can be categorized into 2. 1, the more impactful, and 2, the interim substitute. HCFCs and methyl bromide are the interim substitute around which you have Kigali arrangement. CFCs, halons and CTCs are identified with the much culprit, they are higher magnitude culprit. So with the multilateral fund, ozone depleting substances have been sufficiently been stabilized. Kigali arrangement is to build over that development. So now we have categorized the parties to Vienna Convention into 3 groups, giving them 36, 45 and 47 as the time frame to freeze up HCFCs and methyl bromide. And when I talk about Indian compliance to Montreal Protocol, it falls in the domain of INCCA. INCCA is Indian IPCC. So apart from Montreal Protocol compliance, it has created the assessment report, which is called 4x4, how Himalayas, Northeast, Western Ghats and coast, how agriculture, water, forest and health are likely to get affected by change of the climate and what we should do. Apart from that, we are having carbonaceous aerosol program, an LTEO, that has been mobilized in India towards mitigating and adapting to the change of the climate. ये bulky heads इस तरह से organize करके manageable हो जाते हैं. आप कभी भी सारे के सारे annual report of nodal ministries नहीं पढ़ सकते. You have to take the understanding of these in terms of this frame and thereafter we are building it. And mind it, India is considered to be one of the most serious players when it comes on to the climate assessment. And that is the reason every attempt, whenever there has been the tug of war between developed and developing country, India has taken the forefront. An Indian stand has been taken up as strong purview. IMAP is Indian Middle Atmosphere Program. Middle समझाया ना, middle का मतलब क्या हुआ? Middle stratosphere. जो हमारा शुरू हुआ था ना कार्बोनेशियस एरोसोल, इसकी शुरुआत हो गई थी 1980s में एज IMAP. उसको फिर हमने कार्बोनेशियस एरोसोल प्रोग्राम को जस्टिफाई किया.
India is the only developing country that has got a dedicated satellite to monitor soot particles.